Hi to all. Today we will discuss regarding the Unitarian features of Indian federalism. Along with the above discussed federal features, the Indian Constitution have some Unitarian features which reflect the spirit of its centralization spirit. Those are: the unitary character of Indian Constitution is very strongly demonstrated by the provision of a very strong central government. The following facts reflect these features. A. The Union list, which over which the Union government have exclusive power for jurisdiction, is the largest list with 98 subjects, which include most important and high revenue earning subject. The concurrent second, the concurrent list, which contain 52 subjects, is all. Second, the concurrent list, which contain 52 subjects, is also virtually in the hand of the center or central government, because of the rule that in case there is conflict between center and state regarding the concurrent list, then the decision of or the jurisdiction of the center is final. Number C. The Constitution gave residuary power to the center and not the state. D. The constitutional history since 1950 so that there is a tendency that limit the state list by incorporation more and more subjects either in concurrent list or in union list. Thus, the division of power in India favor the center vice versa the state. The first feature जोटा कि इंडिकेट करुच्ची इंडिया गोटे यूनियन ऑफ स्टेट माने सॉरी इंडिया यूनिटारी फीचर सेटा होची ए स्ट्रांग सेंटर. तो इंडिया जो फेडरलिज्म तार गोटे मेन ये होची कैरेक्टरिस्टिक होची इंडिया फेडरलिज्म रे माने सेंटरटा होची स्ट्रांग. केमिति आम जो यूनियन लिस्ट अच्छी जहाँ ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ तैयारी करे पारे तार सब्जेक्ट संख्या स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ठारू बड़. एबे सेठी 98 सब्जेक्ट अच्छी जोटा कि इम्पोर्टाट सब्जेक्ट जमीती आमर कौन इम्पोर्टाट फैक्टर सब अच्छी मैंने वार पीस ये सब अच्छी आउ जे कि अधिक कौन कहते रेवेन्यू यार्न करे बस अधिक रेवेन्यू माने अधिक रेवेन्यू पाए से सब सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट रे अच्छी. सेकेंड होची जो कंकरेंट लिस्ट जोटा कि 47 सब्जेक्ट ला 52 अच्छी सेटा भी वर्चुअली इन द हैंड ऑफ सेंटर पाखर अच्छी हाथ में कहीं यदि केबे भी कंकरेंट लिस्ट रे सब्जेक्ट को नहीं सेंटर और स्टेट भितर कॉन्फ्लिक्ट हुए ताले सेंट्रल लॉ टा ही सुपीरियर रहबो देन द स्टेट लॉ. Thirdly, the Constitution of India संविधान रेजिडुआरी पावरटा सेंटर हाथ दे स्टेट हाथ रे नुहे. फोर्थली जदि आम कन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखा 1950 रु आज जाए आम देखीचे आम स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट क्रमागत भाव कमा जाउची आइदर यूनियन लिस्ट इनक्लूड करा जाउची किंबा स्टेट लिस्ट सॉरी कंकरेंट लिस्ट इनक्लूड करा जाउची. एई सब प्रोविजन को देखिले आम देखिबा जो आम जो डिवीजन ऑफ पावर अच्छी से सेंटर को अधिक माने स्ट्रांग करा जायछि स्टेट को टिके वीक करा जायछि. Then number 2, the power of the union to reorganization of the state and the change of its boundary. The union government can change the boundary of the state even without informing the concerned state. In 1956,
the Union government passed the State Reorganization Act and made wholesale changes of the territory of the state. In the recent past, Uttarakhand, Jharkhand, and Chhattisgarh were carved out of UP, Bihar, and MP respectively. All the changes of the boundary of federating unity of India have been the result of the central action. The second is the power of union to reorganize or rename the state. The state माने यूनियन पावर अच्छी कौन से स्टेट को रिओर्गानाइज कर पारिबो कि ना चेंज कर पारिबो ना चेंज कर नुआ ना दे पारिबो. तो यूनियन गवर्नमेंट रे पावर अच्छी से चेंज गोटे स्टेट रे बाउंड्री को चेंज कर पारिबो एमिति कि से जो स्टेट रे बाउंड्री चेंज हेबो ताकू ता विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट. तो जमीती आमर कौन आस छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड तैयारी हैला यूपी आ मध्य प्रदेश को माने भांगी ताकू कौन कर्व करके भांगी देकी. तो एगुड़ा एसबू स्टेट रो परमिशन तमको पड़ेनी आड़ा हूँ टोटाली सेंट्रल गवर्नमेंट रो एक्शन. थर्ड, सम लिमिटेशन अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट ओवर द स्टेट सब्जेक्ट. Each state have the power to jurisdiction or administer over the subject which contained in state list. However, in this respect also there are present some limitation. First, limitation on the legislative power of the state. A. The governor has the power to reserve any bill passed by the state legislature for the assent of the president. B. Upon request made by two or more than two states, the legislature, the union parliament can make law for the state list. C. During the period of emergency, the union parliament can enjoy the power to legislate on the state subject. D. When the Rajya Sabha acting on the Article 249 passage a legislation by the majority support of 2/3 majority. D. When the Rajya Sabha acting under Article 249 passage a resolution supported by 2/3 majority and declare that the state subject is the subject of the national importance, the union parliament have get the right to legislate on it for 1 year. E. The union parliament have the power to make any law necessary for meeting any obligation resulting from a international treaty or treaty made by India union government with another state of the world. Thus, under some circumstances, the Indian power union power extended to the subject of the state list. तो नंबर 3 कौन नंबर 3 रे जो स्टेट लिस्ट अच्छी स्टेट माने स्टेट मानकर भी स्टेट लिस्ट किसी सब्जेक्ट ऊपर लिमिटेशन अच्छी माने स्टेट लिस्ट ऊपर माने लॉ तैयारी करिया पई. तो आम कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अनुसार स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट थी तापर स्टेट माने ही एक्सक्लूसिव पावर एंजॉय करेंगे फॉर द जुरिस्डिक्शन और एडमिनिस्टर. किंतु किसी कंडीशन रे किसी सिचुएशन रे स्टेट लिस्ट रे थिबा सब्जेक्ट गुडाक ऊपर स्टेट भी लॉ तैयारी करि पारे नाही. तो को कंडीशन रे फार्स्टली द माने स्टेट गवर्नर पाखे पावर अच्छी से कौन सी गोटे सब्जेक्ट जोटा कि स्टेट असेंबली रे पास होती रिजर्व कर रखिपारे
ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପରମିସନ୍ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ପାଇଁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଠିକ୍ ଭାବିବେ। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଯଦି ଏକାଧିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ସେଣ୍ଟର ଲ ତିଆରି କରୁ, ତାହେଲେ ବି ସେ ୟୁନିୟନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ଲି, ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଥାଏ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ୟୁନିୟନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାୱାର ପାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। Fourthly, according Article 249 of the Constitution, जदि राज्यसभा गोटे रिजोल्यूशन पास करे जो यही माने किसी स्टेट सब्जेक्ट जोटा कि नेशनल इम्पोर्टाट तापर यूनियन पार्लियामेंट लॉ तैयारी करवा दरकार, ताहले गोटे वर्ष पाई से सब सब्जेक्ट उपरे से सब स्टेट सब्जेक्ट उपरे यूनियन पार्लियामेंट लॉ तैयारी करे। एंड लास्टली, जिते बड़े यूनियन गवर्नमेंट कौन सी ट्रिटी बा इंडियन गवर्नमेंट कौन ट्रिटी बा किसी एग्रीमेंट साइन करे विथ अदर स्टेट, जदि दरकार पड़े सेते बड़े भी यूनियन गवर्नमेंट बा यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट उपरे लॉ तैयारी करे। नेक्स्ट 4.4 emergency provision of the constitution. The emergency provision of Indian constitution also reflect the Unitarian characteristic of Indian constitution. In the event of emergency arises due to external aggression or war against India and the internal armed rebellion, the president can declare the national emergency in India. After such declaration, the Union Parliament gets the power to make any law which is deemed necessary for meet this emergency. In such events, it is the duties of state to follow the central directives and authority. When the President of India declares the constitutional emergency or state emergency in a state, the administration of such state has come directly under the President of India. On his behalf, the governor becomes the real executive head of the state and start running its administration. Then the Union Parliament gets the power to legislate on the state on the subject of state list. The relationship between Union and that state is become Unitarian. Further, the President can declare the financial emergency in India. He can take all suitable steps for meeting such emergency, and for this can issue any instruction for the state which are binding on them. तो नंबर 4 कौन है एमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान रे जो आमर जरूरीकालीन व्यवस्थार प्रोविजन अच्छी सेटा भी इंडिकेट करुच्ची कौन आमर यूनिटेरियन फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कौन जदि केतेबेले आम एक्सटर्नाल आर्म हुए एक्सटर्नाल माने कौन एग्रेसन हुए बा वार हुए बा इंडिया एगेंस्ट के वार डिक्लेयर करे कि इंटरनाल आर्म रिवोल्यूशन हुए देश भितर माने राज्य राष्ट्र भितर कौन ये है माने कॉन्फ्लिक्ट है ताहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमरजेंसी डिक्लेयर करि पारंती। तो जो एमरजेंसी डिक्लेयर करे हुए से आम यूनियन पार्लियामेंट जो लॉ सब तैयारी करे कौन पाई तैयारी करे से जो एमरजेंसी डिक्लेयर होता है से एमरजेंसी को सुरखुरे चलिया एमरजेंसी जो जो लॉ दरकार से लॉ तैयारी करे। जेहेतु माने एमरजेंसी डिक्लेयर होता है से स्टेट मान ड्यूटी थाए दे शुड ओबे दिस लॉ मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। या व्यतीत आमर आर्टिकल 356 अनुसार स्टेट एमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी डिक्लेयर हुए जिते बड़े गोटे स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेसिनरी ब्रेकडाउन हुए जिते तैयारी माने डिक्लेयर करा जाए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। से टाइम रे कौन हुए आम जो स्टेट लेजिस्लेचर थाए आम जो विधानसभा थाए से आइदर भांगी जाए न सस्पेंड हुए। से समय भी से समय कौन हुए जो स्टेट एमरजेंसी डिक्लेयर हुए से स्टेट माने जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट का हाथ को चली जाए।
आउ गवर्नर से स्टेट रे प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से शासन करती डायरेक्टली शासन करती तो सही समय भी जिते कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है सेते भी स्टेट सब्जेक्ट उपर सेंट्रल गवर्नमेंट बा यूनियन पार्लियामेंट लॉ तैयारी पारे थार्डली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर हुए अंडर आर्टिकल 360 सेते भी माने यूनियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट माने से इमरजेंसी को टैकल करने बा से इमरजेंसी को मीट करने विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शन दे थांती से सब इंस्ट्रक्शन को भी स्टेट गवर्नमेंट मानवा को बाध्य 5 कंट्रोल ऑफ यूनियन over state in some cases. Each state of Indian Union has been assigned the duty to exercise its executive authority in such manner it can ensure compliance with the executive law. For this purpose, the Union can give necessary directives to the state. It can issue all necessary direction to the state. Moreover, the union government, with the consent of the concerned state, can entrust any function of union to the state government. तो 5 टा होची कोन कंसर्न कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टन केसेस किसी केस रे यूनियन स्टेट को कंट्रोल करि परिबो को केस रे तो सब स्टेट रे गोटे दायित्व बा कॉन्स्टिट्यूशन सब स्टेट को गोटे दायित्व देछि से जो लॉ भी तैयारी करिवो स्टेट पाई से माने सेंटर सहित कंप्लायंस करे बा सेंटर लॉ सहित खाप खुआई कि लॉ तैयारी करिवो सेथिपाई यूनियन स्टेट को विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शन देई थाए तो बेले बेले यूनियन गवर्नमेंट चाहिए मैं गोटे स्टेट रो कंसेंट नहीं कि परमिशन दे कि ताको किछि माने यूनियन फंक्शन स्टेट को करबा को भी दिए यूनियन फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करि पारे नंबर 6 रोल ऑफ यूनियन रिगार्डिंग द इंटरस्टेट और 6 role of union regarding interstate river or river value dispute. The union parliament has the power to provide by law for the adjudication of the any dispute or complaint with the respect of the use of water of any interstate river or river valley. तो यूनियन गवर्नमेंट पावर अच्छी जदि केबे इंटरस्टेट रिभर को नहीं राजरा जो नदी को नहीं झगड़ा हुए जमी महानदी को नहीं छत्तीसगढ़ ओडिशा भितर चली सेपटे आंध्र ओडिशा भितर सेमती आमर पोलावरम माने प्रकल्प को नहीं चली सब जो डिस्प्यूट हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट बा यूनियन गवर्नमेंट ही सॉल्व करि पारे ता ऊपर से ही लॉ तैयारी करि पारे नंबर 8 Single Constitution. The Indian Constitution is a single, unified and common constitution for both Union and state. The state, with the exception of Jammu and Kashmir, do not have their own constitution, but now the Jammu and Kashmir has no more their separate constitution. Now Jammu and Kashmir under the union of Indian Union due to abolition of Article 370. तो आमर जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कौन इंडिया रे केवल गोटाए कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जोटा कि एप्लिकेबल बोथ फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट सेंटर पाई भी स्टेट पाई से एप्लिकेबल आउ 2019 पूर्व जम्मू एंड काश्मीर अक्टोबर 2019 पूर्व जम्मू एंड काश्मीर गोटे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन थिला किंतु सेटा एबोल्यूशन 370 आर्टिकल एबोल्यूशन पर एबे जम्मू एंड काश्मीर कौन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सेटा एबे से भी इंडियन यूनियन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने से भी जम्मू एंड काश्मीर भी एबे इंक्लूड हैला अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
8. Most of the constitution can be amended by union. Another feature which reflect the unitary spirit of the constitution is the procedure of amendment. The union alone can initiate the procedure of amending the constitution. Only some amendment proposal require to set for the ratification of state legislation. The role of state for amending the constitution has been kept limited. So number 8 होउची most of the constitution can be amended by the center union द्वारा amendment हुए. तो एटा भी रिफ्लेक्ट करूची द यूनिटरी स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेंटर यूनियन गवर्नमेंट चाहिए से एकुटिया भी अमेंडमेंट प्रोसीजर को इनिशिएट कर पारिबो किछि केस रे जोटा कि यूनियन गवर्नमेंट गोटा माने येटा को माने अमेंडमेंट प्रपोजल को स्टेट लेजिस्लेचर पठाए केवल तार रेक्टिफिकेशन पाई से माने किंतु मैक्सिमम केस रे अमेंडमेंट गुड़ा सब पार्लियामेंट रे ही हुए किछि केस से स्टेट को आसे. Number 9 single citizenship. The Constitution of India provides a single unified citizenship for all the Indian irrespective of their domicile. An ideal federation like USA and Switzerland, the people enjoy the dual citizenship. They are the citizens of their respective provinces as well as the federation. तो सिंगल सिटीजनशिप बा एक नागरिकता भी गोटे यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक रे गोटे इम्पोर्टेंट फीचर्स जेमिति कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमको सिंगल सिटीजनशिप देछि आमे माने इंडियन यूनियन सिटीजनशिप सहित जो स्टेट हम रहउचे से स्टेट सिटीजन आमको माने डबल सिटीजनशिप नबाकू पड़ुनी आमे 18 वर्ष है मैंने आम इंडियन सिटीजन भी हो पारे आउ जो स्टेट रे रोचे से स्टेट रे भी सिटीजन होचे कि गोटे आइडियल फेडरल कंट्री सिस्टम होची जड़े नागरिक निज निज स्टेट सिटीजनशिप थरे ग्रहण कर से आउ थे तार फेडरेशन सिटीजनशिप ग्रहण कर यूएस रे जड़े नागरिक आगे यूएसए थी जो स्टेट से बास कर से स्टेट सिटीजन हम तापर से यूएस सिटीजन हम किंतु इंडिया से सिस्टम नहीं. Number 10 unequal representation of the state in Rajya Sabha. The state do not enjoy the equality of representation in union. They get seat in Rajya Sabha in proportion of their population and is fixed by the constitution. These do not enjoy equal seats in the Rajya Sabha. The Indian system of giving representation to the state in the Rajya Sabha is not based on the true federal principle of the equal representation of all the federating states. तो माने राज्यसभा सब स्टेट गुड़ाक रिप्रेजेंटेशन एका नहीं तो आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अनुसार आमर अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गोटे स्टेट पॉपुलेशन अनुसार आम राज्यसभा सीट पाई थाउ जमी ओडिशा 10 जन अच्छा ओडिशा पॉपुलेशन 10 जन अच्छा तो से अनुसार आम सीट पाई थाउ. ये जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन अच्छी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीट इन द अपर हाउस एटा बेस्ट होउनी बा एटा गोटे फेडरल कंट्री रो प्रिंसिपल नुहे. फेडरल कंट्री प्रिंसिपल होउची राज्यसभा को सब स्टेट रो समान संख्यक लोक बा प्रतिनिधि जिबे. 11 सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. Even while adopting the federal structure incorporating the division of power between union and state, the Constitution of India incorporates the single integrated judiciary common for both union and state. The Indian judicial system is a single hierarchical system with the Supreme Court at the head, High Court at the middle or state level, and subordinate court in the district level.
द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कौन जो आमर डिवीजन ऑफ पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कला अडॉप्ट कला से डिवीजन ऑफ पावर भी आसला तो किंतु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आम संविधानटा आम सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अडॉप्ट कला आम जुडिशियल सिस्टमटा सिंगल जदि बा सुप्रीम कोर्ट अच्छी हाई कोर्ट अच्छी सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छी किंतु सुपीरियर कोर्ट बा हाई माने सुपीरियर कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट जहाँ रूल रेगुलेशन करिवो रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑल द कोर्ट माने व्हेदर इट इज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर बाउंड टू ओबे दिस लॉ और जुरिस्डिक्शन से आमर हूँ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जोटा कि इंडिकेट फर्दर इंडिकेट कर द स्पिरिट ऑफ यूनिटरिज्म इन इंडिया 12 कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज द प्रोविजन ऑफ कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS IPS IFS फर्दर इंडिकेट द यूनिटरी स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन 13 common election commissioner for organizing the election for the center as well as the state. The constitution of India organize the common election commission both for the center and the state. The election commission of India has the sole responsibility for conducting all election or by election for the union parliament and state legislature. The parliament has the right to legislate on all matter of election. The state have passed law for organizing the election, but they have to refrain from violating the law made by the union. तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमको कॉमन इलेक्शन कमिशन देछि बोथ फॉर द यूनियन एंड स्टेट यो इलेक्शन कमिशन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन इलेक्शन केमी सुरखुरी हम आम यूनियन इलेक्शन हो स्टेट इलेक्शन हो बाय इलेक्शन हो सब इलेक्शन को इलेक्शन कमिशन ही कंडक्ट करे तो इलेक्शन कमिशन कौन किसी गोटे प्रोविजन लॉ पार्लियामेंट तैयारी हुए स्टेट भी लॉ तैयारी कर स्टेट को स्ट्रिक्टली मना है जे जो लॉ जो बेसिस रे लॉ तैयारी कर सेंट्रल लॉ को से अपोज करिवो नाही भायोलेट करिवो नाही 14 common comptroller and auditor general. The president enjoy the right to appoint the comptroller and auditor general for the union for India. The comptroller and auditor general can verify the and checks the account of the union and the state. He formulated the rule regarding the manner of maintaining the accounts and record. तो आमर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कॉमन सेंटर और स्टेट पाई आमर प्रेसिडेंट ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करते जे कि वेरीफाई करती आ चेक करती आमर सब स्टेट रो सेंटर सब अकाउंट सब शुणी थी ऑफिस रे मार्च मास ऑडिट आसे तो से सब सेंट्रल गवर्नमेंट रो एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रो एम्प्लॉय से माने भी माने प्रोविजन बा सब नियम तैयारी कर कौ बेसिस तुम तुम अकाउंट को ठीक ठाक माने ये कर पारिबो मेंटेन कर पारिबो 15 सेंट्रल पावर टू अपॉइंट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट द हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द गवर्नर however the governor of each state are appointed by the president of India and he hold office during the pleasure of the president. This makes the governor as the central representative of the state. At times, he behaves as the instrument of central controller interference in the state administration. तो जिते प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट होती से स्टेट कौन सेमती किसी माने ये न थाए काम न थाए कहीं गवर्नर होचन गवर्नर को अपॉइंट करते किए प्रेसिडेंट अपॉइंट करती और जो जाए से प्रेसिडेंट प्लेजर बा प्रेसिडेंट माने जो जाए प्रेसिडेंट चाहती से पर्यटन से रुहती तो
ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହେଡ଼୍ ହେଲେ ବି ସେ ସେଣ୍ଟରର ଏଜେଣ୍ଟ ବା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। 16 Financial superiority of union. The Constitution of India lays down in detail the financial relationship between center and state. It provides in detail the allocation of taxes for the union and state. In doing so, added important has to the union government. It has been giving a bigger share in revenue. The state has been made dependent on the central grants and aid. तो फाइनेंशियल सुपीरियरिटी भी आम सेंटर को मिलूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितेबाला आमर माने से फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भितर से डिसाइड कर देछि आलोकेशन ऑफ ग्रांट एंड एड भी से डिसाइड करिछि। तो से रेवेन्यू क्षेत्र में सेंटर को सुपीरियर पोजिशन मिली रेवेन्यू रे भी सेंटर शेयरटा अधिक अच्छी आउ सब स्टेट सेंटर ग्रांट आ एड को अपेक्षा करता है। जो बजेट पास हुए सब स्टेट अपेक्षा करते केते ग्रांट मिलला केते माने बजेट रे केते ग्रांट मिलला। तो फाइनेंशियल क्षेत्र में भी सुपीरियर पोजिशन एंजॉय करूछि सेंटर। Therefore, India is a federation with the Unitarian spirit. All the features reflect the Unitarian characteristic or Unitarian spirit of Indian Federation. These Unitarian features has compelled the scholars like K.C. Ware to describe India as a quasi-federal state, with unitary features as the primary features and federal features is the secondary features. Some other scholars describe it the Unitarian federalism or mixture of unitarism and federalism. The present cry for grant of autonomy and more power to the state demonstrate further that the Indian Union has worked more as the Unitarianism and less as the federalism. आम जो सब जगह फीचर्स डिस्कसन करवा आम ए निष्कर्ष पहुँचा जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा कौन गोटे माने मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरिज्म से केसी वेयर कहते इंडिया हूँ गोटे क्वासी फेडरल स्टेट माने पार्टली फेडरल एंड पार्टली तो नुहे हाँ माने अर्ध संघीय राष्ट्र जो थे कि फेडरलिज्म माने यूनिटरियन फीचर्स बेसी स्ट्रंग फेडरल फीचर्स एत स्ट्रंग नुहे कहीं बारंबार आम मागु सब स्टेट गुड़ा मागुंट आमको ऑटोनॉमी दियो आमको ऑटोनॉमी दियो जो फेडरल स्टेट होता तो सब स्टेट निज एरिया रे ऑटोनॉमस एंजॉय करते जेहेतु फेडरल पूरा पूरी एटा फेडरल स्टेट नुहे माने आमको मागुया को पड़ुची जे आमको ऑटोनॉमी दियो पावर दियो सेटिपई एटा माने फेडरल स्ट्रक्चर किंतु यूनिटरी स्पिरिट। With this we have completed the features of unitarism and federalism. In next class we will discuss regarding the center state relation.